Hello and Assalamu alaikum everyone. Good evening. This is Manur Tai from the YouTube live of NAVAFIZ. Hope everyone is enjoying their Sunday today. And if you are joining for the first time, so let me tell you the brief introduction about NAVAFIZ. NAVAFIZ is basically the management consultancy firm with the offices located in Dubai, UAE, and NAVAFI's aim is to help the job seekers, specifically coming to Dubai for job from any part of the world. So this session of labor law, like UAE labor law, is specifically organized for the HR professionals who are going to expand their career in the HR field in UAE. And if you are already in UAE in the HR field, so this would be beneficial for you as well. And this session is going to be beneficial for the employees who are not aware for the UAE by the UAE basic laws. So I'm your host today, and we have our co-host Mr. Liaquat Saab, who is the founder of Nawafiz. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप sir? Walaikum salam. Thank you very So much. And he's a very humble person I have found in my career journey. So thank you so much for giving me the opportunity to host this session. And today we have our guest speaker with us, Mr. Danish Maqsood, who is UK certified HR professional, and he is currently residing in UAE. And he has more than 4 years experience in HR field over there. So, Assalamu alaikum, Danish. How are you? Welcome, Sam. I'm fine. What about you? I'm good, thank you. So Danish, starting from your life, like the basic education and the early life, and how did you start your career in UAE? So can you please enlighten us about your UAE experience and how did you get your job in UAE? Okay, so first of all, welcome everyone to this session. I have completed my MPhil from Pakistan, Lahore, from Spira University. So then I have Mm-hmm. worked there for approximately around 4 to 5 years, and I decided to move into the UAE around Mm-hmm. in 2018. So that Mm-hmm. time, one of my friend helped me out to get a Um, job here. So then mm-hmm. when I entered this country, so the everything is different here in the UAE. Exactly. क्योंकि Exactly. यहाँ पे जो है वो टैलेंट डिफरेंट होता है और जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं they are from all over the world. So then I Right. decided to also get something education certificate or degree from Mm-hmm. international markets. So then I started my certification in 2021 from Okay. say UK. It's the certificate body is CBD, and they have a certificate name. This is CHRM, which is Certified Okay. Human Resource Manager. So that this is the demand of the this market. सो आप यहाँ से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एशियंस पीपल हैं उनको जो एशियन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ की मार्केट में सर्वाइव करने के लिए या खुद को अपग्रेड रखने के लिए या अपने कैरियर में ऊपर जाने के लिए उनको जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स करने पड़ते हैं मे बी इट कैन बी फ्रॉम यूके और यूएसए और एनी अदर देन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ वेरी वेल नोन. Mhm. So you are saying like if you want to start your career in Dubai or in UAE specifically, so you should have You should have some international certification with you, right? Now, just little bit correction. You can start from career here UAE with your country's Mm-hmm. education, but to Mm-hmm. enhance or to get grow or to get a better position in the UAE market, then you Mm-hmm. have to get something certified certifications from the Okay. UK or the USA. Okay. Sounds great. So moving towards our next question, like we have seen that from February 2022, UAE labor laws have been changed. So what three major changes were introduced in their new labor laws? Okay, so let me tell you a little bit about the brief introduction of this UE labor law. Because Mm-hmm. mostly, if you search on the website or the on the internet, you will find the name of the law. I will read exactly words for you. It's called Mm-hmm. Federal Degree Law number 33, 2021.
सो Yes. लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप 2022 के 2022 के लॉ की बात कर रहे हैं, बट जो वर्डिंग है वो 2021 है। तो ये लॉ जो Right. था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में, और 2021 में ही अनाउंस कर दिया गया था कि ये लॉ 2022 से इम्प्लीमेंटेड होगा। तो इसी वजह से Okay. जो लॉ है वो नॉन एज 2022, बट इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2021। सो इसलिए बुकिश में आपको हर जगह पर 2021 ही नजर आएगा। अच्छा, Right. इसमें जो था जो सबसे मेन चेंज था 2022 के लॉ में, वो ये था कि पहले यूए की मार्केट में और गल्फ में, स्पेशली अगर हम यूए के लेबर लॉ है तो हम यूए से रिलेटेड ही बात करते हैं, that in 2021 the Friday was the official holiday in the UAE. Yes. Yes. So they changed it to official holiday of the Sunday. So Okay. government used to get day off on Friday and Saturday. Then they change it to Saturday and Sunday. Okay. Just like in Pakistan. Just like in Pakistan, just like in UK, just like in USA. तो ताकि जो यूए की मार्केट को ऑल ओवर द वर्ल्ड अलाइन किया जा सके, जितनी भी Hmm. मार्केट कंपनीज के ऑपरेशन हैं वो लोग इजीली जो है वो कर सकें। अच्छा, ये दूसरा इसमें मेजर चेंज है, और ये चेंज मैं मतलब खुशी खुशी और एक्साइटेड होकर कहता हूँ हमेशा कि ये जो चेंज था वो दिस इज द इन द बेनिफिट ऑफ द लेबर, Okay. because in 2021 there were two types of contract: unlimited contract and limited contract. So Mm-hmm. they changed in 2021 only limited contract. Okay. So Acha, what's the difference between limited and exactly. unlimited? Actually, there was a difference between limited and limited contract was the probation period and the termination terms and conditions of the contract between the employers and the employees. And Mm-hmm. also the major thing was the criteria of calculating the gratuity was Okay. different for Mhm. a limited contract and for the limited contract. So now, because it's only limited contract, so all employees will get 21 days per year for their gratuity. So Oh. in 2021 the criteria was different. तो Mm-hmm. ये बहुत अच्छा बेनिफिट पॉइंट है एम्प्लॉयज के लिए, जो सेकंड इसमें बिग चेंज आया था। अच्छा, थर्ड चेंज ये था कि इसमें यूएई ने डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लाइक परमानेंट एम्प्लॉयज, हाफ टाइम एम्प्लॉयज, flexible working hours you can say, and the third one is you can say the hybrid contract as well, and Mm-hmm. freelance contract as well. I'm talking Okay. about from the labor point of view. I'm using these words which used by ministry in the contract. Mm-hmm. And the third and fourth change, the main change जो इसमें आया है वो है more additional leaves introduce करवाई गई हैं इस contract में। Like इसमें आप ये कह like easy words में आप ये कह लें कि अब आपकी अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी डेथ हो जाती है तो उसमें भी आपको पेड लीव्स मिलेंगी। मैं Okay. आपके लिए जो है वो उसको रीड आउट तो कर ये ऐसा देता पहले हूँ। नहीं था? ऐसा पहले जी नहीं, नहीं था? पहले नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ एनुअल लीव्स थी और सिक लीव्स थी, और 2021 में एडिशनल लीव्स अनाउंस की गई थी फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद की तरफ से। वो थी पेरेंटल लीव्स, मींस जो इसको इजीली वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर कोई हस्बैंड यहाँ पर है और उनकी जो है वो डिलीवरी हुई है, बेबी हुआ है, तो हस्बैंड को भी 5 दिन की पेड लीव गवर्नमेंट ने Mm-hmm. अनाउंस कर दिया था, तो उनको 5 दिन की पेड लीव्स मिलती थी Mm-hmm. 2021 में। अब 2022 लॉ में उन्होंने एडिशनल लीव्स ऐड कर दी हैं, जिसमें इन केस अगर आपकी किसी ब्लड रिलेशन की डेथ होती है तो उस केस में भी आपको 5 डेज पेड लीव्स मिलेंगी एनुअली। Okay. ओके, और उसके बाद फिर अगर उसके अलावा अगर आपके अदर देन सो लेट मी करेक्ट फॉर यू, सॉरी, जो 5 डेज लीव हैं वो हस्बैंड या वाइफ की डेथ पर आपको मिलेंगी। दीज आर द वेरियस एडिशनल लीव्स विच वाज इंट्रोड्यूस इन Mm-hmm. 2022। और Mm-hmm. अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी की डेथ होती है देन इन दैट केस आप यू कैन गेट 3 days पेड लीव्स। Okay. So these were the main major changes, and you can say these all changes are in the benefit of the employees. Totally benefit in the That's great. for the employees.
चलेंगे, तो बहुत अच्छी बात हो गई कि एम्प्लॉइज के बेनिफिट में आया है ये जी चेंजेस। बिल्कुल। आप और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जहाँ वह हमेशा जब भी कोई लॉ बनाया गया है स्पेशली फॉर रिलेटेड टू द लेबर, तो उसमें मोस्ट जो फेवर्स हैं, वो जो ईजीनेस है, वो लेबर्स के लिए हमेशा, थैंक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री, दे ऑलवेज कीप द इन देयर माइंड अबाउट द लेबर्स। Okay, so yes, I think we covered more of it, and now we have like the third question: does the new law, UAE labor law, impact the UAE working day? So I think you Exactly. have, yeah. Yes, I have already mentioned that in Hmm. 2021, the official holiday, the day was Friday. So Hmm. they changed it on Sunday. Now here government used to get Saturday and Sunday, and Hmm. same things. They have changed So it on the day. I want to ask one thing: it is implemented on all over the UAE, or like Abu Dhabi has some No, different no, laws, and I will. No, no, no. has some different If laws, and Dubai has some different. no, see the ministry in all over the UAE is known as Mohre. Short Hmm. abbreviation is MOHRE. Hmm. So this is a ministry for the complete UAE. All the labor laws are the same for the all seven Emirates. Okay, okay, okay. So I think we have so many comments over here. So let's move Yes. towards the comments. Sure. Yes. So I was thinking the same that maybe before moving to our Hmm. pre- pre-planned questions, we can take some questions Sure, from sure, Yes, audience sure, because sure, otherwise it will be overloaded. sure. So yes. let's बहुत finish सारे it one by one. हम्म, So after that we can move. So starting from Ashish, just one what is the retirement age in UAE after which employment visa can be renewed? cannot be renewed. As Yeah. per my knowledge, Cannot be. it is I think so 60 years. In the after that age, you cannot get a contract from the Ministry of Labor. If you can submit, anyone can submit their contract, but the ministry has a right to accept it, approve it, or reject it. So Yeah. दानिश अगर वो 60 years के हो जाते हैं and then they have to live over there, so वो रह नहीं सकते या वो अपनी like family के sponsor visa पे रह सकते They have government have different plans for them other than this labor laws, because currently we are talking about only UAE labor laws. So हैं? that Okay. particular kind of the person will come under the other rules from the Okay. government. Okay. Right. So he. Mhm. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नादिर अब्बासी की तरफ से है कि सजेस्ट यूएई लेबर लॉ कोर्स विच आई कैन अटेंड ऑनलाइन। मोस्ट प्रोबेबली इनका कंसर्न ये है कि दे आर फ्रॉम द एचआर और फील्ड, तो Mhm. और ये क्वेश्चन भी आई थिंक इन आवर अपकमिंग लिस्ट में है कि जो लोग इंडिया या पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से आ रहे होते हैं जी उनके जी लिए Mhm. मोस्टली प्रॉब्लम ये हाईलाइट होता है जी कि आपको एक तो आपका यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा जी। आपको यूएई के लेबर लॉ का नहीं पता। तो देखिए आई इसमें थिंक रेफरेंस उसके रेफरेंस से उनका क्वेश्चन भी है कि इसके लिए कौन सा आप कोर्स रिकमेंड करेंगे। देखिए, one of the purpose of this session is to complete this question for the so many candidates. Other than that, you can get a lot of videos, and a lot of companies also have made a short clips, and also they made a short documents on their company's pages on the LinkedIn. You can get all the information from there. उसके अलावा जो है वो इनकी जो हमारी मिनिस्ट्री है यूएई की जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट के ऊपर लेटेस्ट लॉज वहाँ पर फाइल मौजूद है। अगर किसी को स्पेशली चाहिए तो आप हम तीनों में से किसी भी को लिंक्डइन पर आप हमें कमेंट कर दें, हमें मैसेज कर दें, हम आपको डायरेक्टली वो फाइल सेंड कर देते हैं आपकी ईज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट फाइल्स मौजूद हैं तो आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सी फाइल रेलिवेंट है। तो आप हमें इंडिविजुअली जो है वो सेंड कर दें, हम आपसे वो शेयर कर देते हैं। और मे बी एक ऑप्शन हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं कि सेशन के बाद हम जो लिंक्डइन के ऊपर एक लिंक शेयर कर देंगे कि ये मेन फाइल है यूएई लेबर लॉ की, आप उसको रीड Right. आउट कर लें तो यू कैन गेट द बेसिक इंफॉर्मेशन, नॉट द बेसिक, all detailed information about the UAE labor law, which will help you to grab a job here at the starting point.
Okay, that's great. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. नेक्स्ट जो कमेंट है वो हमारा सोहेब हसन की तरफ से है. सोहेब हसन मोस्ट प्रोबेबली आप जानते होंगे, ही इज द किंग ऑफ लिंक्डइन, और आई Oh, मोस्ट Sohail प्रोबेबली Hassan. Okay. It, sir, इनके sir, this comment of Seb Hassan is giving me goosebumps. Really, Serious. I Same here. thank you so much, sir. Thank you so much कि आपने जो है इस सेशन पर कमेंट किया. We are, I want to say that we are child of you in this type of the I'm actually sessions. following him. I am actually following him since so many months, and he is very much like बहुत ज़्यादा इतने interactive उनके post होते हैं और इतने knowledgeable post होते हैं. So definitely, thank you so much, Sohail Hassan, for joining this live session. Okay. Next, again from Nadir Abbasi, also share detail of acquiring CHRM certification. अच्छा, इसमें मैं आपकी हेल्प आउट कर देता हूँ मिस्टर नादिर. यूएई में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सर्टिफिकेट्स करवा रहे हैं. आप यू जस्ट सर्च ऑन द गूगल CHRM सर्टिफिकेट इन यूएई. You will get a list of the institute who are recognized from the CPD body. As well, you can also get different certificates. मैं इसमें एक बहुत की पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली रिलेटेड टू HR. पहले आप मार्केट को सर्च करें कि इस वक्त मार्केट में किस सर्टिफिकेट की डिमांड ज़्यादा है. एज पर माई नॉलेज SHRM is in demand in the UAE and CIPD. Actually, CIPD is too much expensive. So if you want to go toward any certification, I would personally recommend SHRM. Right. Next है comment from Arsalan Ali. After visa cancellation, in how much time we can raise complaint for the unpaid dues? If owner is same and first trade visa cancelled and owner promised to pay later but never paid, 15 month passed. I think इनका कुछ technical जी issue है. जी I जी think मैं आपको मैं जी you मैं got the point. जी जी I got the point. जी. Arslan, as per the UAE laws and UAE rules, first you should not sign a labor cancellation paper until you get your unpaid dues. ओके, अगर आपने ऐसा कर दिया है, स्टिल आप अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ जो है वो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं. और उसका टाइम पीरियड ये होता है कि जिस दिन आपका कंपनी में लास्ट डे है उस दिन से लेकर नेक्स्ट 14 डेज के बाद 14 डेज टाइम पीरियड दिया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कंपनी को कि आफ्टर एन एम्प्लॉय एग्जिट योर कंपनी हैज 14 डेज टू क्लियर देयर ऑल ड्यूज. So it's already 15 months, so it's simple. Just go to the helpline of the labor department and book your complaint. They will guide you completely. Right. अरसलान का कमेंट्स कंटिन्यू है नेक्स्ट उसमें भी कि लेटर अंडर न्यू licensed by the same owner, new visa received. Now owner is not paying old visa dues, which is of 8 years. So I think आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं. जी सर. Okay. Until unless you want to add up something. Next comment is from Ashish. As per 2022 labor law, after jobless, grace period to stay in UAE is 6 months. What will be the grace period if job contract is over? See, this is a bit confusion going on, and I have received a lot of questions past days from my friends as well. This 6 months grace period and 1 month grace period is 2 months grace. It's not from UAE labor law. It's from the immigration. And this grace period is depend on the category, visa category. It's linked totally to the immigration side, not the labor side. This is first difference of between labor department and immigration department. Easy words may the answer is this 6 month probation grace period is for the green visa holder. UAE has recently introduced so many visa categories like golden visas, green visas. So our visa normally the employees has the employment visas. So the grace period is for them now. Immigration has also little bit increased the grace period for the normal visa holders. So it depends on your profile. As per my experience, किसी भी जो grace period है वो fix नहीं है.
पहले 30 डेज फिक्स था, अब किसी को 60 डेज जो है इमिग्रेशन अलाउ कर रही है, किसी को 70 डेज अलाउ कर रही है, और किसी को 80 डेज अलाउ कर रही है. सो इट्स डिपेंड ऑन योर वीजा कैटेगरी, नॉट ऑन योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी. Right. Again, another comment to make you more happy is from Wasim Raja, dear brother Danish. Good to see you on the office live session related to UAE Thank labor you so law. much. Thank you so much, Wasim bhai. Thank you so much. Uh, and another comment from Nadir is thank you, but I was asking to get proper certification. ये उनका जो कमेंट पहले सर्टिफिकेशन से रिलेटेड था जिसमें आपने लिंक्स जी जी, वगैरह का मैं इनको क्लियर कर देता हूँ. जो सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन जो भी कोई इंस्टीट्यूट आपको देगा वो KHDA से अटेस्टेड होगी. KHDA एक इंस्टीट्यूट है यूएई गवर्नमेंट का, दुबई गवर्नमेंट का, विच इज नोन एज नॉलेज समथिंग लाइक दिस. तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपकी डिग्रीज को टेस्ट करती है, वैसे ही KHDA जो यहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट किया जाता है. तो जो इंस्टीट्यूट आपको CHRM का सर्टिफिकेट देगा वो आपको अटेस्टेड सर्टिफिकेट देगा, KHDA से अप्रूव्ड. Right. Next question is from Mahesh Kumar, sorry. Kindly tell us about WPS change in UAE. Now company has to send all the employees salaries through WPS 100%. If company fail to send even a single employee's salary through WPS regularly for 3 months, their WPS system will be blocked. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, लाइक जो यूएई में नहीं है तो वो आप WPS क्या है, ये कुछ लेकिन बता सकते हैं इसके? WPS जो है वो एक सिस्टम है यूएई गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है सिंपल वर्ड्स में, ताकि वो ट्रैकिंग रख सके कि एम्प्लॉयज हैं यूएई में काम करने वाले उनको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. जब जो है वो लेबर कार्ड, जहाँ पर जब कोई किसी का वीज़ा कंप्लीट होता है तो उसको एक गोल्डन के तरह का कार्ड इश्यू होता है मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसको हम लेबर कार्ड बोलते हैं. उस लेबर कार्ड के ऊपर 2 नंबर होते हैं. वन इज एक जो है वो पर्सनल आईडी होता है, पर्सनल नंबर होता है, और सेकंड जो होता है वर्क परमिट नंबर होता है. तो कंपनी जो है पर्सनल नंबर को यूज करते हुए सैलरी ट्रांसफर करती है. The answer to this question is something about technical also and the theoretical also. So companies का जो क्योंकि जो एक्सचेंज हैं, जो बैंक ट्रांसफर्स हैं, जो सिस्टम यूई ने बनाया हुआ है वो ऐसा इंटीग्रेशन है बिटवीन ऑल द मिनिस्ट्रीज कि जब तक आप पर्सनल नंबर यूज नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी की भी सैलरी ट्रांसफर नहीं होगी. इसीलिए WPS का वर्ड यूज किया जाता है. इवन अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी किसी की सैलरी ट्रांसफर करना चाहती है और सारी फॉर एग्जांपल एक्सचेंज के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट चैनल्स हैं सैलरी ट्रांसफर करने के, तो अगर आप किसी एक्सचेंज का चैनल यूज करेंगे तो एक्सचेंज आपसे सबसे पहले पर्सनल नंबर मांगेगा एम्प्लॉय का. ओके. सो इन सिंपल इसका आंसर ये है कि कंपनी को, अगर कोई भी कंपनी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी के 100 एम्प्लॉयज हैं तो कंपनी को 100 एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रांसफर करनी है थ्रू WPS जिनका लेबर कार्ड निकला हुआ है. अगर कंपनी 99 एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रांसफर करती है लेकिन वो एक एम्प्लॉय की सैलरी कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स ट्रांसफर नहीं करती तो उसका सिस्टम ब्लॉक होगा. मींस कंपनी कैन नॉट अप्लाई एनी लेबर कॉन्ट्रैक्ट इन द मिनिस्ट्री. ओके. ओके. Right. Next question from Mahesh is like to know about percentage of salary to be transferred by company and individual. I have mentioned already 100% they have to transfer. Right. Then we have comment from Wasim Raja. For all the audience, kindly share your thoughts on both situations of an employee who resign or get terminated. For how I many months she will be paid by the employer? I got it. So we have also this question in our prepaid plan already about the termination period and the Termination. probation period. So should I answer that, Miss Manu, from there? Yeah, you can. We can cover there as well. You can. Yeah, Okay, fine. I think if it is
in our pre-plan, then let's move on to our pre-plan, and this question, this Mhm. Sure, answer will sure. be also Yeah. covered. So we have covered, I think, this question for maternity leave. Yes. No, 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 no. Okay. Still, Yeah. we have to cover it. We have to maternity leave. Yes. How many days of maternity leave am I entitled? Like, अगर मैं हूँ या कोई और वुमन है तो उसको कितनी मिलनी चाहिए? As per UAE Labor Law, Article 30, a woman is entitled to get 60 days maternity leaves. Mm-hmm. Okay, the first 45 days will be fully paid, and Okay. the other rest of 15 days will be half paid by the company. Mm-hmm. इसमें आप कह लें कि ये तो सिंपल है कि 60 आपको अलाउ है, जिसमें 45 आपको फुली पेड होंगी और 15 जो है वो Mm-hmm. आपको हाफ पे होगी. लेकिन Mm-hmm. अगर इसके बाद भी आप मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उसमें जो है वो मिनिस्ट्री ने डिफरेंट कंडीशंस जो है वो डिफाइन की हुई हैं. उस कंडीशंस के मुताबिक जो है मदर जो है वो इजीली अपनी लीव्स अवेल कर सकती है, बट दैट लीव्स विल बी टोटली अनपेड. उसकी डिफरेंट Okay. कैटेगरीज हैं. इफ वी गो इन डिटेल सो इट विल बी डिफिकल्ट टू Mhm. cover other ठीक है. points. So Yes. anyone who want any female who wants to get the more details, we will share that file on our NAVAFIZ page link, then they can read it from that file. Okay, so we have the another question like, is there a maximum duration of employment contract? Yes, because this is limited contract, so every labor contract has a 2 years duration. Okay. After Okay. that duration, either employee or employer mutually can terminate that contract, or they can renew the same contract. Okay. Moving towards another question, how many days of sick leave an employee entitled to per year? Like, एक साल में कितनी मिल सकती हैं उनको? Sick leaves, an employee can get 90 sick leaves during his employment contract. 2 years contract, he can get 60 leaves, Mm-hmm. 60 Mm-hmm. sick leaves. Oh, sorry, 96 leaves. From 90 sick leaves, 45 sick leaves are paid, Mm-hmm. 15s are half paid, and the rest of Mm-hmm. 30s are non paid. But Okay. in all type of sick leaves, the employee Mm-hmm. has to submit a certificate to the company Like the to medical get certificate, they have to medical submit. certificate. Exactly. Okay. All right. So moving towards another question, we have what are the conditions with respect to probation period? Probation period is depend on. There are actually two answers of this question. If an employee is in an on probation period, Mm-hmm. then he has to submit. So okay, two categories during probation period and after probation period, and then the rules are different for the employers and for the employees. Okay, Mm-hmm. अगर हम Mm-hmm. बात करें कि प्रोबेशन पीरियड की, तो फर्स्ट आई विल गाइड यू अबाउट दैट फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड. अगर किसी एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है और वो एम्प्लॉय प्रोबेशन पीरियड में है. प्रोबेशन पीरियड मीन्स 6 मंथ्स. अभी एक एम्प्लॉय ने एक कंपनी को ज्वाइन किया है और उसको भी ज्वाइन किए हुए 6 मंथ पूरे नहीं हुए हैं, तो ये 6 प्रोबेशन पीरियड आपके लेबर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है. आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं कोई भी पर्सन. तो एम्प्लॉय को 14 डेज का नोटिस पीरियड देना होगा. उसमें भी Okay. कंडीशन ये आती है कि या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 14 डेज का नोटिस पीरियड दे ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, आई एम अगेन मेंशनिंग, या Mm-hmm. और उसको सेम डे में टर्मिनेट करके 14 डेज की सैलरी पे करे. दो Oh, कंडीशंस हैं. ओके, okay. आफ्टर अगर एम्प्लॉयर जो है आफ्टर प्रोबेशन एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना चाहता है, तो उसको 30 डेज का 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर रहा है एम्प्लॉय को. सेम Mm-hmm. कंडीशन, या तो 30 डेज का नोटिस पीरियड एम्प्लॉयर देगा या 30 डेज की सैलरी एम्प्लॉय को पे की जाएगी अगर सेम डे एम्प्लॉयर को टर्मिनेट करना है अपने एम्प्लॉय को. अच्छा, Oh, जो नोटिस पीरियड की कैटेगरी है, ये 30 डेज नोटिस पीरियड है उन लोगों के लिए, उन एम्प्लॉयज के लिए जो कि कंपनी में 1 साल से लेकर 5 साल तक काम कर रहे हैं, 1 to 5 years. ओके, mm-hmm. अब अगर कोई एम्प्लॉई को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं कंपनी में, देन कंपनी को
एम्प्लॉय को 2 months का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा टर्मिनेट करने के लिए। Okay. और अगर उस एम्प्लॉय को एक ही कंपनी में काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, देन कंपनी को उस एम्प्लॉय को 3 months का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। कंडीशन सेम रहेगी, या तो नोटिस पीरियड सर्व करवाना पड़ेगा या 90 days की सैलरी पे करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय की साइड से। इफ एम्प्लॉय वांट्स टू रिजाइन ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, he has to give 30 days notice period to the employer. Mm-hmm. Okay, same condition will remain same. If he is working from 1 to 5 years, he has to submit 30 days notice period. If he is working from 5 to 10 years, then he has to submit 60 days notice period to the company. And if he is working more than 10 years, then he has to submit a 90 days notice period. यहाँ पर एक बात बहुत बरीकी की है, मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय 5 साल से कंपनी में काम कर रहा है, उसको 6ठा साल है या 7 months है, 7 years है सॉरी, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ 30 डेज का नोटिस पीरियड है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो लॉ में लिखा गया है उसको 60 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, रिगार्डलेस व्हाटएवर हैज मेंशन इन हिज लेबर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक बहुत मोर इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि यूएई लेबर लॉ में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, वो ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड वांट्स टू रिजाइन, देन उसकी जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय जा रहा है, न्यू कंपनी में जा रहा है रिजाइन करके, तो उसकी न्यू कंपनी को उस एम्प्लॉय की करंट कंपनी को वीजे की कॉस्ट पे करनी है। Okay. ये यूएई लेबर लॉ 2021 में ऑफिशियली मेंशन कर दिया गया है। Okay. Okay, और अगर ऐसा हो कि लाइक इफ ही वांट्स टू रिजाइन, ठीक है, तो और वो नोटिस पीरियड सर्व ना करे, तो फिर क्या कंडीशन है? लाइक उसको फिर पे करना होगा कंपनी जी, को? सेम चीजें हैं, सेम विल अप्लाई फॉर कंपनी एंड फॉर द एम्प्लॉय एज वेल, कि अगर दोनों नोटिस पीरियड सर्व नहीं करवाना चाहते, देन दे हैव टू पे इन कैश। Okay, so moving towards another question, which is, can employer force worker to work in something other than the casual activity? The official answer to this question is that an employee has to work only as per the agreed terms conditions with the employer. अब ये मोर ऑफिशियल इसका आंसर ये हो सकता है कि जो डेजिग्नेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, फॉर एग्जांपल अगर एक अकाउंटेंट है और उसकी जो टाइटल है इन लेबर कॉन्ट्रैक्ट जॉब का, तो ही हैज टू डू द रिस्पांसिबिलिटीज ओनली फॉर द अकाउंट्स, but practically things are not like this. Employer asks you to do so many things, but employer can request you to do that task, but forcefully he cannot do. He cannot ask any employee to do some other works. Okay, so I think we have more comments over here. So Sure. let's move towards there, Liaquat sir. Yes, I think before we go to our ninth question, कि जिसमें communication, I think I have something wrong here. No problem. Unfair dis under the new labor law. इस क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम कमेंट्स ले लेते हैं दो तीन comments है, वो ऑडियंस पढ़ के। लें. Sure, तो sir. वसीम राजा इज सेइंग डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आपने शुरू में थोड़ा ब्रीफ किया है So, इसको। yeah, I will explain again, sir. Mr. Wasim, as per the new UAE Labor Law, now there is no limited or unlimited contract, only limited contract. So, if any employee is having unlimited contract till now, his benefits is automatically transferred as per the limited contract. And as per my information, when the ministry introduced these laws, they had mentioned already that the company must change their unlimited contract to limited contract. Yes, and even the government job employees job, or the people Yes, sir. like working in Yes, sir. Yes, sir. Adnoc Yes, and sir. other companies Yes, sir. on direct hire, they are also now changed into a Limited contract. limited Yes. contract. So we have another question from CV Biryani Gaming. Okay,
So he's asking for gross salary or basic salary. There Like is the difference. no formula, or there is no amount has been mentioned or percentage has been mentioned from the ministry in the labor law. It's totally depend on the companies to companies, Right. Okay. how much they want to I pay think the this is basic. about the WPS के ट्रांसफर जो सैलरी करनी है No, sir, they have. 100%. He actually, this guy wants to ask how much company should give you the basic salary. This question should be two questions, not one question. He has mentioned or gross salary is something different, the basic salary is something different. But mostly the employees have a question about basic salary, because so many companies have 10% basic salary, 30%, 40%. So they usually ask, is there any percentage defined in the labor law? So answer is no. It's totally depend on the company. Okay. We have another question. Great job, everyone. Thank you. The newly introduced unemployment insurance in 2023, is the employee going to bear the cost or the employer pays to ministry? No, this one has to be paid from the employee side, not the employer side. Employers already get insurance for you when they apply your visa. Okay. Moving towards another question. Minimum Next. salary for B or B Tech IT engineer from My Reaction World in Dubai. So this information you can, as per my experience, my knowledge, you can get it from Google as well as from Gulf Talent website. They have mentioned some very easy graphs there. You can just mention your select your education criteria or your working criteria or working field, and put your number of experience. You will get the market salary from there. Yes, and there is What's the one. website again? What's the website? Gulf Healthline. No, Gulf Talent. Gulf Talent. Okay. Yeah. Okay. And there is one more website called Glassdoor. They are also providing a list of these salary ranges. Plus, I have one more list also from another source. So if you will WhatsApp me, I will provide you the PDF file which has all this data based on 2022 search. Okay. Then we have again, no, talking about termination. Termination to Termination. Okay. So here in the labor law, termination. When we are talking about termination, we will talk about two different benefits: annually benefits and the gratuity benefits. So Mhm. gratuity will be calculated on your basic salary. Okay, and the termination. The annual leaves will be calculated depend on the company. But in the labor law, they have mentioned that if an employee resign, then the company will pay him the annual bonus leave only on the basic salary. Okay. Okay, I think if company wants to lay off immediately, Then he has to pay you the It's a notice period on depends on your category in cash. If you are entitled 30 days notice period, then he has to pay you 30 days salary. okay. So Mahesh want to ask again, like, is leave salary to be paid on the basis of basic or total salary? It's the answer to this question depends on the condition. If you have resigned or company have terminated you, or you are going normal in a normal way to your home or to your home, then it's again depend on the company. There is no basic criteria defined in the labor law. Mostly companies are paying annual leaves on basic plus HRA. But what I have read in the UAE Labor Law, they have mentioned basic plus agreed allowances. So normally there are two types of allowances in the contract. One is your basic salary, second is your accommodation allowance, third is your transportation allowance. So Mm-hmm. as per my knowledge, company should pay you your annual leave if you are going home on your gross salary. But the most common practice in the UAE is on depends on basic plus accommodation allowance. Okay, we have more comments. Okay, thank you. Thank you so much for joining this session. Then You're again, most we have welcome. Ashish Jaswani. Thank you for organizing. Thank you so much for joining, Ashish. Then we have another question from Mir Mehman, and it is also regarding about the salary package for the fresher in UAE.
who has done engineering in electronics plus MBA in marketing with 7 to 8 years experience. So, We have already uh, mentioned that you can get the details of about your field but and the salary. but if you are a fresher in UAE, then they are going to consider you the fresher. Like regardless of how many years of experience do you have in your own home country, they are going to consider you the fresher there. Yes. Okay, so there is another question. Arab doing the same work is paid double salary. Can we I complain to the ministry? Can company discriminate between Arabs and non-Arabs? Yeah, No, this I no, think no. this question we will skip. No, And no. we will move to Yeah. our question. I think Okay, we were so on the question number 9 or 8. no, 10, 10. We were on And 10. Yes. So, is there such a thing as unfair dismissal under the new UAE labor law? जी देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं अनफेयर डिसमिसल की जो कि Mm-hmm. सबसे एक प्रोमिनेंट होती है मैं उस पर थोड़ा सा जो हाईलाइट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग ये को एम्प्लॉयज़ को डर होता है कि अगर हम अपने घर पे छुट्टी पर गए हुए हैं एनुअल लीव पर अपने गए हुए हैं तो कंपनी कहीं पीछे से हमें कैंसिल ना कर दे तो इन Mm-hmm. दैट केस जो आपका एग्रीड पीरियड है कंपनी के साथ अगर आप उस पीरियड में वापस आ जाते हैं और अगर Mm-hmm. कंपनी आपको उस पीरियड में कैंसिल करती है या टर्मिनेट करती है देन इन दैट केस यू कैन मेक अ कंप्लेन इन द लेबर डिपार्टमेंट बट अगर आप उस एग्रीड पीरियड के बाद वापस नहीं आते कंपनी में उसमें भी एक पीरियड डिफाइन है 7 डेज का और 14 डेज का डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी अगर आप उस Mm-hmm. डेज में मोस्टली 14 डेज में 2 वीक्स के अंदर आपको अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि आप किस Mm-hmm. वजह से वापस नहीं आ सके या Mm-hmm. इवन अगर आप अपने काम पर हैं और आप कंटिन्यूसली 7 डेज या 10 डेज तक काम पर नहीं आते जॉब पर नहीं आते और अपनी कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते देन कंपनी हैज़ अ राइट टू terminate your contract in that case you cannot make any complaint against your company. Okay. So, moving towards another question, what challenges employees face in the UAE company even after labor laws? Actually, there are two types of answer for this question. One is a theoretical answer and one is practical answer. So I think because the question is more practically, so actually still everything is defined in the UAE labor law. Still, employee feels a little bit fear from the company side that Com- if they make a complaint in the labor, then maybe company will make a problem for him and create more difficulties for him. So ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की यही कोशिश होती है कि अगर कुछ कंपनी की तरफ से डिले भी है तो वो म्यूचुअली कम्युनिकेशन करके अपनी कंपनी के साथ इसको सेटल डाउन कर लें Okay. बट So, moving towards, yeah, जी जी continue करें आप, श्योर sorry. श्योर क्योंकि इसमें जितना इजीली अप्रोचेबल है बिकॉज द लेबर जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट है वेरी इजीली अप्रोचेबल फॉर द एम्प्लॉय एंड फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल. So personally, Okay. if you ask me, so I also personally suggest everyone, please settle down mutually with your company. If it's taking a little bit delay, then try to make it respectfully or mutually. But Oh, if it is, has passed a long period, like we have received one question that his employer didn't pay him from last 15 months, in that case, mm-hmm. you should go legally. Mm-hmm. Okay. So we have another question. Like, what measures should HR take when hiring a candidate as per laws? Like, when you are interviewing the candidates in Dubai or in UAE, so what things they should keep in their mind when hiring that candidate? See, for hiring that candidate, the company should keep in mind that they cannot ask the employee to start working with them on visit visa. This is the only very simple question. Other things remain same. The recruitment rules and regulations. You can ask an Mm-hmm. employee to come to your office and for the to check their skills. Is it whether from the communication skills or practical things test you can whatever if you want you can do with the candidate but you cannot ask them to work for you on whatever the visa type visit visa cancel visa spouse visa until unless
you get a NOC from the previous employer, or you get their labor contract for them. अच्छा तो बट मैं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली ये है कि जो ये कंपनीज हैं यूई के अंदर वो ट्राई यही करते हैं, और हमने आई हैव हर्ड सो मैनी स्टोरीज कि एम्प्लॉयज़ ने विजिट वीज़ा पर, मोस्ट ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो विजिट वीज़ा पर होते हैं, तो कंपनीज ने काफ़ी कैंडिडेट्स का कंप्लीट विजिट वीज़ा जो है वो यूज़ कर दिया, और आफ्टर दैट उनको वीज़ा नहीं दिया, तो काफ़ी लोगों को इस तरह की मुश्किलात आ रही हैं. तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि क्योंकि प्रैक्टिकल एक चीज़ मार्केट में है, तो आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, और आप उसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते एज अ इंडिविजुअल पर्सन. तो आप एक एम्प्लॉय को, जो भी अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है, तो आप उनको 2 और 3 डेज का मैक्सिमम ट्रायल पीरियड आप दे दें उनको. आप उनको बोल दें कि अगर आपको जज करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं आपकी स्किल्स को, तो मैक्सिमम 2 और 3 days. If they ask you to exceed from these days, then please ask them politely, respectfully, that you can't continue with them unless they provide you their visa. Okay. So I think we have one more question over here. And how can employee or employer make complaint each other and under what circumstances? So I think we have pretty much covered this question. Like Exactly. they can make in the more or labor department. So moving towards our comments, like comments are amazing, and I'm very glad कि बहुत अच्छा response आ रहा है इस session पे. So where were we? If we Okay, go, so I think, uh, I yeah, think we have missed two more comments. उससे पहले के जो दो और comments हैं. okay, So Mir Mehman is saying thank you for the response. Thank you so much, Mir Mehman. Then we have the comment from UAE Job Alerts, and they are saying great topic. Thank you so much, UAE Job Alerts, for joining this session. Then we have, do you think dropping CVs door to door is effective during visit visa? No. Not at What do you all. I will give you practical example. For example, if you go to Business Bay, so if we assume that there are, for example, there are 50 buildings in the Business Bay area. For example, each building minimum they have floors around maybe, for example, 40. So multiply 50 to 40. Then each Mhm. floor they have uh, 10 offices. So how much CVs you will print for yourself to drop the CVs in that area? So ओके not at all. आई थिंक इसके लिए आप जो है ना, जो करंट उनकी जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं, आप उसी पे जाएं जी, और वहीं पे अप्लाई करें रादर देन सेंडिंग और ड्रॉपिंग सीवीज डोर टू डोर. Then we exactly. have one more question from CV डोर टू Biryani. डोर के रेफरेंस से, डोर टू डोर के रेफरेंस से, अ, एक ऐसी कंपनी जिसमें आप 1000% श्योर हो कि जॉब है, then you can dedicate special time to apply your 6D approach. But other than that, you should not waste much time. Exactly, और sir. प्लस सीवी आप जब रिसेप्शन पे देके आते हैं, इट मोस्टली गोज टू रिसाइकल बिन. Exactly. अगर आपकी जॉब कैटेगरी है ऐसी जिसमें डोर टू डोर आपको लगता है इज ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग फुल सीवी, गो विद द स्मॉल कार्ड, ताकि सामने वाला एक तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच में आपको डील करता है, और फिर यू कैन, आपका बजट पे भी आपको इजी रहेगा और Exactly. आपकी मैनेजमेंट में भी इजी रहेगा. बट इट डिपेंड्स कि आपकी टाइप ऑफ जॉब क्या है. अगर आपकी मैनेजरियल या हाई लेवल जॉब है, तो डोर टू डोर इज एब्सोल्युटली नो. बट Yes, अगर sir. आपकी जॉब कैटेगरी इन बिटवीन फॉल करती है, जिसमें कुछ केसेस में यू हैव अ चांस केस के आप एक तो श्योर है कि इस कंपनी में जॉब है, दूसरा ये है कि आप वहां पे यू आर गोइंग विद द रेफरेंस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग. क्योंकि हमारे पास ऐसी स्टोरीज भी हैं कि आप वहां गए और आप किसी से ऑन द रोड मिले या ऑन द डोर मिले, या ड्यूरिंग लंच टाइम आपको किसी बंदे से आपका इंटरेक्शन हुआ, एंड दैट रिलेशन जो है उसमें यू हैव अ स्पार्क, और अगले ने आपको फिर रिस्पॉन्स दिया. Of course, sir. But it all depends from case to case. Okay, sir. You have to go wisely. Nowadays हम जो नवाफिस के जॉब सर्च सपोर्ट सिस्टम में 10 स्टेप्स हैं, उसमें हम आपको जो डोर टू डोर एडवाइस करते हैं, उसका मतलब होता है वर्चुअल डोर टू डोर.
You have to go door to door virtually. virtually. Virtually in a sense ke you have to go follow the company page from LinkedIn, and you have to penetrate in that company employees links and contacts through LinkedIn, right? So Okay. moving on to the question, can you please explain the whole recruiting process? I think इस पे तो एक separate session रखना पड़ेगा, जी from सर। sourcing to bringing बिल्कुल the सब employee सोशल on होना board. चाहिए। इसका I सिंपल सा think सर, इसका एक इजी सा और सिंपल सा आंसर ये भी हो सकता है कि देखिए रिक्रूटिंग जो प्रोसेस होता है वो अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। आपकी इजी वर्जन के लिए ये है कि किसी कंपनी में एक डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो सिंपली वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, वहाँ से आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी, वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर आप उनके सारे क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तो लीगली वो आपके लिए आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स आपसे देके आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर आपको सेंड कर देंगे और आपको ऑनबोर्डिंग करवा लेंगे। ये एक वेरी सेम जो सिंपल सा एचआर का प्रोसेस आंसर है। होता है वही होगा ना, सेम जो एचआर प्रोसेस है वही फॉलो कर रहे जी होंगे ना। जी जी बिल्कुल। but I think in short this answer is perfect. यस सर। लेकिन अगर हम इसकी डीप एक एक पॉइंट की डीप जी उसमें सर, जाएं वो तो तो बहुत चीज़ें हैं जी। we need to have another To have यस a सर। different session. topic. यस सर। Okay, so thank you so much for your response. Thank you so much, Mahesh. But I want to clarify one thing regarding WPS. Each month, an employee to be paid 80% salary with maximum of 20% deduction. Also, total 90 or 80% of total salary of a company. Now, the last line maybe is the old information. As per my latest information, if company fails to transfer the salary of one employee, I'm talking about one employee consecutively for 3 months, then the Mm-hmm. system WBS system will be blocked. Okay. Deduction Then, deduction mm-hmm. 80% salary and deduction something else. कि अगर आप Mm-hmm. फॉर एग्जांपल के अगर एम्प्लॉय की कोई डिडक्शंस हैं, देखें ये एक सेपरेट टॉपिक है कि एक कंपनी किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में से कितनी अमाउंट एज अ फाइन डिडक्ट कर सकती है। अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ मिसबिहेव किया है, डिसिप्लिनरी, ये इसका वर्ड है, डिसिप्लिनरी एक्शन अगर कंपनी ने लिया है और किसी एम्प्लॉय को फाइन किया है, तो वो फाइन Mm-hmm. कितनी परसेंटेज मैक्सिमम कंपनी डिडक्ट कर सकती है उस एम्प्लॉय की मंथली सैलरी में से। उसके बाद कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के Mm-hmm. और वो 100 एम्प्लॉयज़ में से एक मंथ में 90 एम्प्लॉयज़ की सैलरी ट्रांसफर करती है और नेक्स्ट मंथ वो अगेन 90 एम्प्लॉयज़ की सैलरी ट्रांसफर करती है, बट ये 90% एम्प्लॉयज़ प्रीवियस मंथ के 90% एम्प्लॉयज़ से सेम नहीं होते, देन फाइन, देन नो प्रॉब्लम। But what I have told you that, for example, Danish is working in one company. If company fails to transfer Danish salary for consecutive 3 months, then their WPS system will be blocked. Okay. And if then again we have a question from my reaction word. If company doesn't pay salary for last 3 months, not providing health insurance, where can I get help? So I think labor Simply department. complain, yeah, labor department, yes. Then we have one more question, which is our last question from Wasim Raja. What do you suggest if a candidate gets an offer letter but visit couldn't be processed by the employer? See, ये बहुत important question है. yes, I will explain you. I have practical experience of that and I have that information from the labor department as well. देखें, एक ऑफर लेटर आपको कंपनी देती है, जो एक अब जो पिछला जो क्वेश्चन हमने छोटा सा ब्रीफ आंसर दिया है ना लीगल प्रोसीजर्स का, वो भी यहाँ पर कवर होगा, जरा आप सब गौर से सुनिएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट एक कंपनी में उसको जॉब मिलती है तो सबसे जो इनिशियल पार्ट होता है वो ये होता है कि कंपनी आपको अपने लेटर हेड के ऊपर ऑफर लेटर देती है। वो एक आपकी इनिशियल कंफर्मेशन है जॉब कि आपको जॉब मिल गई है। उसके बाद कंपनी को उस लेटर हेड की उस जॉब ऑफर की बेस के ऊपर आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से। जो जो ऑफर लेटर कंपनी ने आपको अपने लेटर हेड पर दिया है, दैट हैज नो लीगल वैल्यू। You cannot make any complaint in the department on the basis of that letterhead. अगेन यहाँ पर सिनेरियो ये आएगा कि अगर आपने उस लेटर हेड की जॉब ऑफर लेटर की बेस के ऊपर आपने जॉब स्टार्ट कर दी और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं दी, then you cannot go anywhere because you were working in that company illegally.
हाँ, अगर कंपनी ने आपको एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सिस्टम से निकला था, इन सिंपल वर्ड तहसील के सिस्टम से निकला था, वो दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज द लीगल वैल्यू। और अगर उसकी बेस के ऊपर कंपनी आपकी सैलरी नहीं लगाती या आपका वीजा प्रोसेस नहीं करती, तो देन यू कैन गो टू द लेबर डिपार्टमेंट एंड देन यू कैन गो आल्सो इन इमिग्रेशन, बिकॉज अगर आप विजिट वीजा पर हैं और कंपनी ने आपका चेंज स्टेटस नहीं करवाया तो आपका आफ्टर विजिट वीजा आपके ऊपर फाइन आएगा। और बाद में कंपनी इनकार करती है, देन यू कैन सबमिट दैट लीगली labor contract from the ministry that this is approved, this was approved, then I joined that company and they didn't process, so it's not my mistake, from the mistake, then the procedure will be the different and in more detail. ओके, मैंने वैसे देखा है लाइक फेसबुक पे मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ, तो वहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जिनके ऑफर लेटर्स लाइक आए हुए होते हैं किसी को ईमेल पे, बट वहाँ पे मैंने कमेंट्स देखे हैं जो लोग कहते हैं ये फेक है। तो इस जी तरीके से कंपनी कुछ ऐसे होते हैं कि लाइक आपको फेक ऑफर लेटर्स भी आ देखिए, सकते वो हैं। उसकी वो फेक ऑफर लेटर की स्टोरी ये है कि अगर आपने कंपनी में ज्वाइन ही नहीं किया, आपने कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया, आपने कंपनी में ईमेल ही सेंड नहीं की और आपको डायरेक्ट वहां से ऑफर लेटर, एक ईमेल से ऑफर लेटर आ जाता है, ऊपर नाम लिखा है, स्टैंप लगी है, तो एक सेंसिबल पर्सन को ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि यार मैंने तो इंटरव्यू ही नहीं दिया, तो मैं इतना लकी कैसे हो गया कि मैंने किसी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया और मुझे जॉब भी मिल गई। तो एक सेंसिबल पर्सन को खुद ही अंदाजा कर लेना चाहिए। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि अगर आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, फाइन, और आप वहां से कामयाब हो गए, उन्होंने आपको ऑफर लेटर सेंड किया, ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर आप उनको कह सकते हैं कि यस आई एक्सेप्ट दिस ऑफर बट आई विल स्टार्ट वर्किंग विद यू व्हेन यू गिव मी द लीगली लेबर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। Okay, okay. So we have another question. How many paternity leaves are entitled for an employee? 5 paid leaves. Okay, moving towards another And question, we have these 5 paid leave an employee should get from the within 6 months from the date of birth of his child. okay. Then we have again question from CB Biryani Gaming. How employer get the labor contract from labor department? What he offered the employee through offer letter or their on their letterhead? Uh, But I क्या didn't get पूछ this रहे हैं कि लाइक question. एम्प्लॉयर को कैसे मिलता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिपार्टमेंट से? लाइक वो एम्प्लॉय की जो See, कैंडिडेट है उसकी डिटेल्स करवाते होंगे ना सब? जी जी, जब एक कंपनी आपको जॉब ऑफर करेगी तो वो आपसे आपके पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर करेगी, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर आपसे रिक्वायर करेगी और आपसे अटेस्टेड डिग्री आपसे रिक्वायर करेगी इन ऑर्डर टू गेट योर प्रोफेशनल लेबर कॉन्ट्रैक्ट। उसकी बेस के ऊपर वो आपको जो है वो अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है कि अगर आप को एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से निकला हुआ है, तो स्टिल अगर आपको डाउट है कि ये रियल है या फेक है, तो आप वो डबल चेक कर सकते हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। Okay, okay. Then we have Danish. Thank you so much for your valuable answers from Wasim Raja. यू आर मोस्ट वेलकम वसीम भाई। Wasim Raja is also again saying, Dear Liaquat Ali, Mahathir and Danish, thank you so much for conducting such a wonderful session. Thank you so much, Wasim Raja, थैंक यू सो for मच। being such an active participant during this session. Thank you so much again. Excellent. I think हमने Okay, so I think all yes, we important have pretty questions. much covered the. Mhm. जी, आई थिंक महानूर की तरफ कुछ टेक्निकल इश्यूज है सिग्नल जी के। तो दानिश भाई, हमने आई थिंक ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने अब कवर कर लिए हैं, राइट? जी सर, जी सर। अच्छा, मैं राइट। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ लोगों के सामने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं लाइक इनिशियल सैलरी और फ्रेशर्स के लिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि मैं ये समझता हूँ कि यूए की मार्केट ऐसी मार्केट है जिसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन मिल जाती है। तो आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जस्ट इजीली जो लिंक्डइन है या जो यूए की मोस्ट फेमस वेबसाइट्स हैं जिसमें लिंक्डइन है, इंडीड है और नौकरी गल्फ है, आप इन वेबसाइट्स पर जाएं और आप वहां पर जाके अपनी रेलिवेंट फील्ड से जॉब सर्च करें।
तो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएगी कि आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है। जो अभी आप पोजेस कर रहे हैं अपने आप में, आपकी डिग्री, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आप किस हद तक वैल्यू रखते हैं यूए की मार्केट में। आपको वहाँ से सैलरी का भी पता चल जाएगा, आपको हर चीज़ का मालूम हो जाएगा, ऑनलाइन ही सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। जस्ट आप गूगल पर सर्च लिखें, आप गूगल पर कुछ भी लिख दें, आप टूटे फूटे अल्फाज आप लिखें, यूए का जस्ट नाम मेंशन आप कर दें, तो यू विल गेट एटलीस्ट 60-70% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। और अभी तो गूगल से भी Right. आगे की चीज आ गई है, चैट जीपीटी। यस सर, एग्जैक्टली। तो इफ यू गो टू चैट जीपीटी, तो you will get more concise answer instead of scrolling to multiple pages. एग्जैक्टली सर। Or Okay. I was Okay. about to, I think we were We have about to close the program, but still we have another comment. So I think it will be our last comment. If we do overtime, 3 hours a day, is there any fixed amount a company has to pay? If as per the labor law, employer can ask an employee to do overtime only for 2 hours per day, only for 2 hours. But if you are doing three hours per day, then the calculation will be depend that if the overtime you are doing in the morning or night, or in the normal way, or public holiday. So the calculation criteria is different for all of them. Right. okay. Okay. So I think we have pretty much covered all the questions, right? And anything you want to say in the last, Danish? Any tip for the freshers who are coming to UAE for the job, and anything you want to say? I think I have mentioned already that if you have dream to work in UAE, you are most welcome. But do your work. Do please complete your work. You are going to spend your savings of your whole life. सो आपको हर Right. चीज़ प्लान करके आना चाहिए, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, और वेरी इजी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपकी आपकी रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड। एंड वन मोर क्वेश्चन, यस, मोर मैंने लोगों से बहुत सुना है कि यूएई में सिर्फ जॉब उसको मिलती है जिसका रेफरेंस होता है। ऐसा कुछ नहीं है। यस, Sorry. द practices are different here in the UAE relevant to your CV। अच्छा, वो भी कैसे डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ज्वाइनिंग टाइम होता है और वीज़ा कैटेगरी होती है, ये दो मेन कंसर्न होते हैं किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, किसी भी रिक्रूटर के लिए, आपकी सीवी को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। तो आपने अपनी जैसी भी सीवी बनाई हुई है, क्योंकि एक ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है सीवी का कि सीवी कैसी होनी चाहिए, बट एक वेरी बेसिक थिंग है कि आपकी सीवी जैसी भी है, आप दो चीज़ें वहाँ पर मेंशन करना मत भूलें। एक अपनी करंट लोकेशन, और आपका नोटिस पीरियड, और आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। ये तीन मेन चीज़ें कंसर्न होती हैं किसी भी रिक्रूटर के लिए आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। सही। Right. और आई थिंक On नवाफिस a के lighter मेन। note, on a lighter हाँ। note, on a lighter note, मैं कह रहा था, mention your current location and mention कि आप में current कितना है। जी सर, जी। Sahi, sahi. So we have one more question. What measures should be taken by an employee if his or her salary has been reduced due to some reasons by the employer? Like उसको demotion कर दिया. एक्चुअली इसका आंसर ये है कि कोविड में, मैं आपकी चीज़ का रेफरेंस मेंशन कर दूं यहाँ पर। कोविड में जब मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली मेंशन किया था कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिड्यूस कर सकती हैं, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो रिड्यूस करवाया था। वो एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट था आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसमें मेंशन किया गया था कि सैलरी कितनी रिड्यूस की जाएगी और कितने मंथ के लिए रिड्यूस की जाएगी। अब चूंकि कोविड का पीरियड पास हो चुका है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की अब वैल्यू नहीं है, लेकिन नॉर्मल वेज के अंदर एक जो एम्प्लॉयर है वो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी रिड्यूस करना चाहता है, तो उसमें उसको पीरियड मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन जो सैलरी रिड्यूस है, इसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, लीगली इसको डिफेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर एम्प्लॉयर का जो है वो बिजनेस डाउन हो गया है, उसकी बेस पर भी वो कर सकता है। अगर मार्केट का तो आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता आंसर। मोस्टली एम्प्लॉयर की कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस पर Business. ही डिपेंड करता है, बिजनेस ऑपरेशन पर डिपेंड करता है।
और अच्छा एडिशनल इसमें यह है कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय की डिसिप्लिनरी एक्शन की बेस के ऊपर सैलरी रिड्यूस नहीं कर सकता। डिसिप्लिनरी बेस के ऊपर वो कुछ डिडक्शन कर सकता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल 14 डेज के लिए वो उसकी सैलरी भी जो है वो नहीं देगा, उसको काम करने भी नहीं देगा, लेकिन परमानेंट बेसिस के ऊपर उस डिसिप्लिनरी एक्शन की बेस के ऊपर की सैलरी रिड्यूस नहीं की जा सकती। तो आई थिंक इज लिटिल बिट लॉन्ग डिबेट, बट लीगली इसका क्लियर आंसर नहीं दिया जा सकता। सही सही। Okay, so I think we should conclude this session. And thank you so much, everyone, for joining this session. Thank you so much for your comments, for for asking us about every single detail. And thank you so much, Danish, for Most answering welcome. each and every question very patiently and in very detail. And thank you so much for your time. And thank you so much, Riaka Saab, for organizing this session for the people specifically who are in HR or who want to pursue their career in UAE. So thank you so much, everyone. So I think, sir, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, then you can wind up. Yeah, I think all the key points are covered. Major question जो है वो cover हो चुके हैं. But still अगर किसी का कोई question हो तो इस session के बाद वो post कर सकते हैं comment में, and we will try या to answer अगर them. नहीं, अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो मुझे, दानिश को या सर को लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं, Sure. एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट क्वेश्चन एज वेल. इंशाल्लाह. So और next जो है वो most probably hiring process को डिटेल में explain करने के लिए we will Fine, surely fine. सही, do another बिल्कुल session. बिल्कुल Right? Once बिल्कुल again, इंशाल्लाह. thank you very much. It's my Thank pleasure, you sir. so much, Take everyone. care. Same Thank you from my so side. much. Take care. Allah Hafiz. Bye. Allah Hafiz. Hafiz.